जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। Om Shanti. I just feel very fortunate that Daddy's been able to join us tonight, because I personally have taken a lot of benefit from Daddy's company, and not just company, but very, very deep wisdom on the power of soul consciousness. And I know that that is the foundation of yoga in Brahmin life. And a small group of youth coordinators in December had a wonderful opportunity to spend some very personal time with all the daddies, but especially this daddy. And the inspirations that we received then was what prompted me to ask her to come and share some of that depth with you today. So, could I just ask, who doesn't know Daddy Ji here? Who's seeing her for the first time? Okay, just a few of you, but all of you know her. Okay, thank you. So, Daddy Ji, welcome. Thank you for coming. And over to you. मैंने आपका परिचय दिया। ओम शांति। ओम शांति। ये आवाज किसने किया? Who made this sound? Have you feeling that? Who is saying Om Shanti? ये हम आपसे पूछ रही हैं। I'm asking you this. Do you feel who is saying Om Shanti? क्यों? जब हम विशेष रूप से याद में बैठते हैं तो पहले हमें अंदर में ऐसी फीलिंग इमर्ज करनी है। Because when we especially sit for yoga, we have to emerge such a feeling from inside us. अब सुनने वाली, समझने वाली, विचार करने वाली मैं कौन हूँ? And the feeling that we have to emerge is who is the one that is listening, who is the one that is understanding, and who is the one that is thinking. आप लोग अभी अभी अपने से ये ट्रायल करके देखो, अंदर में ये सोचो, अब मैं ये सुनने वाली कौन हूँ? Try this for yourselves. Just for a moment, step inside and ask yourself, who is the one that is listening now? जब आप अपने से ये प्रश्न करेंगे और आपके अंदर अगर फौरन यह जवाब इमर्ज होता है कि मैं जो इसके अंदर सूक्ष्म मैं आत्मा हूँ, वह बोलती हूँ, वह सुनती हूँ। जब ऐसा शुद्ध संकल्प आपको जवाब में आएगा,
आप अगर अपने अंदर को समझ सकते हैं So if you were to sit here and ask yourself this question, and in response, feel the subtle energy of the one that is listening, the तो one that उस is समय thinking, आपके अंदर की फीलिंग then your internal feeling at that moment आपको एक न्यारापन अनुभव कराएंगी will make you feel detached inside. और आप जो कुछ सुनेंगे, And whatever it is that you listen, जो देखते भी रहेंगे, and whatever it is that you continue to see, अंदर से आपको फील होता रहेगा कि मैं इन आँखों के द्वारा देख रहा हूँ, you will जैसे कि मैं keep साथी हूँ। feeling that as if you are a detached observer and you're using these eyes to look through, that you're looking through these eyes at everything around you. और जो कुछ भी देखेंगे, And whatever it is that you see, खुश होते रहेंगे, you will experience happiness on seeing it. जैसे कोई फॉरेनर जब और कहाँ जाते हैं, Just as when a foreigner goes somewhere else, तो वहाँ जो कुछ भी देखेगा, जिससे भी मिलेगा, खुश होता रहेगा। then whatever he sees and whoever he meets, he becomes happy on seeing them and meeting them. तो जब हम अपनी अंदर की इस फीलिंग से मैं आत्मा, And so if internally we sit इसमें- with this feeling, I am the soul, इस शरीर में विराजमान होकर यहाँ देख रहा हूँ, I'm residing in this body and I'm sitting here looking out through these eyes, तो अंदर से आपको फील होगा then you will feel from inside एक तरफ न्यारापन, a detachment on one side, दूसरे तरफ खुशी, and on the other side a happiness from inside. और उसके साथ साथ सूक्ष्म में बाप का अति सूक्ष्म स्नेह, And together with that feeling, you will experience a very deep, subtle love from the Father. परंतु तब जब स्वयं अंदर अपने अंदर ये जागृत है, मैं कौन देखता हूँ, But you will only feel this when inside that awareness is awoken. Who am I? क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं Because when we sit for yoga, तो अंदर ही अंदर हमें स्वयं को स्वयं महसूस कराना है, then what we have to do is internally the self has to realize the self. क्योंकि हम ऐसे कंबाइंड हैं, जैसे अभी शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, Because we're so combined, just as Shiv Baba says, I come and enter this body of Brahma. बोलता शिव बाबा है Shiv Baba speaks ब्रह्मा के द्वारा, through Brahma, परंतु ऐसा कंबाइन है जो बाबा ने आज का कभी ब्रह्मा बोलता है, कभी शिव बाबा but he's so combined that even like Baba said today, sometimes it's Shiv Baba speaking, sometimes it's Brahma Baba speaking. तो हमें देखना है सचमुच मैंने स्वयं स्वयं को पहचाना है, And so I really have to look at this inside myself. Have I recognized myself? मैं स्वयं स्वयं के संकल्प को यथार्थ रीति से समझ पाती हूँ, Do I understand my own thoughts accurately? अथवा मैं जो संकल्प, मैं आत्मा जो संकल्प करती हूँ वो ही कायम रहता है, या उसमें कुछ संकल्प करना अच्छा चाहती हूँ परंतु कुछ मिक्स हो जाता है। Is it that I'm able to keep my thoughts consistent and constant in a particular track of where I want to go? Or is it that sometimes something gets mixed in my thoughts that I don't want?
क्योंकि मैं आत्मा शरीर में अब ऐसी मिक्स हो गई हूँ Because I, the soul, have become so mixed up in this body कि ये दो अलग है और इकट्ठे हुए हैं, ऐसी जानकारी पहले नहीं थी ना। that I don't even realize that I'm separate or I'm combined, because we had no knowledge of this before. अब जब बाबा ने ये पहचान दी है And since Baba has given us this recognition, और अगर सचमुच मैंने इसको रियलाइज किया है and if really I have realized this, तो बरोबर मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। then truly I am the soul that is detached from this body. तो मैं जैसे अंदर आत्मा जागृत होके अपने इस लिए हुए शरीर को देखती हूँ, And then it's as if I, the soul, have awoken inside, and as the living being, I reside in this body. और फिर मैं संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा संकल्प करती And then I, the soul, create a thought. मैंने इस शरीर को धारण किया है, इन आँखों के द्वारा देख रही। I have adopted this body, and I am looking out through these eyes. विराट नाटक के अंदर इस समय At this point मेरा in time part, in the play, जबकि हमें परम पिता परमात्मा के द्वारा यह ऊंची नॉलेज मिल रही है, my part is to receive this most elevated knowledge from the Supreme Father, the Supreme Soul. बाप की नॉलेज सबसे न्यारी है। क्यों? Why is the Father's knowledge the most unique knowledge? क्योंकि जो बाप बताते जाते हैं वो मैं रियलाइज करती हूँ। Because whatever it is that the Father explains to us, I am able to realize that and accept that. और सचमुच जब अंदर वो रियलाइजेशन जागृत है, And when that realization is awakened inside, तो आप देखेंगे अंदर में बहुत खुशी then you will experience a lot of happiness inside. और एक न्यारेपन का अनुभव और भी खुशी देता रहेगा। And that continuing experience of detachment inside will continue to create more and more happiness inside. Now, are you feel like that? Do you feel like that now? Do you feel what that is saying? Yes? Not all are not. Not all are nodding their heads. Who's starting to feel what that is saying? Slowly and slowly. Slowly she's waking up the soul. Can you feel it? Daddy, I have a question. Sometimes when we sit to experience soul consciousness, then we think of the image of the soul as the point. Is it accurate to do that? What is the soul? What am I doing to experience the soul? Am I just holding a point of light? This is for explanation that is soul is point of light. But if I am soul, why I say that point of light? I must feel that light. Light means not only easy, but light means internally powerful. And that light has so much knowledge, because
soul is eternal. So eternal होने के कारण Because the soul is eternal, उनके अंदर inside the soul, अपनी पूरी नॉलेज है. it has its own full knowledge of itself. तो जब मैं अपने को रियलिटी में And so when I'm able to understand myself in the reality of who I am soul, I am a soul. point of light, this is explanation for understanding. But when I am, so what are feelings of mine? That feelings are, I am knowledgeful, I am loveful, I am very peaceful. Realize that peace. Internal that peace, not only silent, complete silence, but with love. Because I have knowledge, I am soul, son of Supreme Soul. Supreme Father is with me. That feeling must be inside, and that feeling emerge. Then you see yourself. Internally you become happy, and that happiness with very quiet. And at that time, internally, you feel that you are seeing self and this drama. Practical nothing. Understand, Brother Neville? No? When you're internally inside, then you see everything as a detached observer in a practical way. So you see the practical You play feel that you for are what it is. detached. You feel detached from everything. Mana drama आपके separate है. सामने जो देखते हैं. Whatever you see in front of you. Now we are sitting here. अभी हम इधर बैठे We're हैं. sitting here now. आँखों के द्वारा ये सब देखते हैं. You're seeing everything through these eyes. पर अंदर में But what's happening inside? हमारे को ये नॉलेज मिली हुई है, पर नॉलेज हमारी फीलिंग में है. We have this knowledge, but this knowledge is embedded in our feelings. It's become a That feeling. I am seeing through this That eyes. I am seeing through these eyes. If I have this feeling, that means I feel, मैं महसूस करती हूँ, तो सचमुच मैं आत्मा कैसे इस बॉडी से काम लेती. So if I have these feelings, then definitely I have realized that I am the soul and I'm making this body function. और यह फीलिंग And this feeling हमारे अंदर पावर इमर्ज करेंगी. emerges power from inside us. जो मैं संकल्प करना चाहूँ, Whatever वही thought, मेरे अंदर चलेगा और कोई संकल्प नहीं है. and what's the power that it will generate? That I will have the power of thought under my control. Whatever thought I choose to create, I can create only that thought and no other thought will emerge. This is the original power of soul.
जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, just as Baba tells us children, हम संकल्प करें मैं शुद्ध आत्मा हूँ, I should have a thought that I am a pure soul. हम उस एक पिता की संतान, I am the child of that one Father, और कोई संकल्प उसके सिवाय न उठे. and there should be no other thought emerged except these thoughts. परंतु हम लोग अभ्यास करते करते But we समझते practice, हैं ऐसा एक संकल्प में स्थित सारा टाइम नहीं हो सकता. but as we practice, we feel that we can't stabilize ourselves in just this one thought all the time. परंतु इसका मतलब कि हमने अपने को आत्मा महसूस अनुभव नहीं कर पाए. But that means the reason why you can't stabilize yourself in that thought over a period of time, because you haven't realized yourself as the soul first. शुरू में In the beginning, जब ये आत्मा की नॉलेज हम लोगों को मिली, when we got this knowledge of the soul in the early तो days, अंदर में वो लगन लग गई then there was this deep love ignited inside, और एक अंदर जैसे कि साइलेंस अति प्रिय लगने लगी. and we began to develop a deep love for silence inside. क्योंकि जब अंदर से मुझे साइलेंस है तो उस साइलेंस में मैं विचार कर सकती हूँ. Because when I have that silence deep inside, then from that silence I can emerge a thread of thought. और उस साइलेंस में मुझे विचार वही आएगा जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं. And from that silence, the only thought that will be created is the thought that the Father is teaching us, of what the Father is teaching us. और जो मैं संकल्प जो उठेगा वो मुझे अपनी ओरिजिनलिटी की फीलिंग देता जाएगा, महसूस कराता जाएगा. And from that place of silence, whatever thread of thoughts emerge, those thoughts will make me experience my own original stage. जैसे हम समझाने में कहते हैं So sometimes when we कि explain, हम अपने को समझे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, we say, I have to consider myself to be a pure मैं soul. सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ. I am the child of the Master Almighty Authority. अंदर शब्दों से हमने अपने को बताया, परंतु उसकी रियलाइजेशन के अंदर से We may have told ourselves these words inside, हमें महसूस होना चाहिए मैं शुद्ध आत्मा, उसकी शुद्धि और उसकी शांति. but it's not enough just to tell yourself this inside. I have to deeply realize, yes, this I, the soul, am pure. I have to experience and realize my own peace and purity. जब रियलाइजेशन है तो उस समय और संकल्प बंद है. When there is this realization, then all other thoughts finish. और वो फीलिंग हमें खुशी देती है. And that feeling brings a lot of happiness. खुशी और अंदर की शांति, पीस. So happiness and also a deep internal peace. फिर उसी साइलेंस में बैठो, संकल्प नहीं चलेगा. And then when you sit in the silence of that experience of your own originality, no other thoughts can emerge. और फीलिंग्स आती रहेंगी जैसे खुशी की बाप से मिलन. And you will have these feelings inside and experience the happiness of a meeting. आप कहेंगे पर उसमें कुछ तो इट इज नॉट क्वेश्चन फॉर दैट. कुछ में नजर आएंगे मना? माना जब हम कहते हैं मुझे खुशी है तो कुछ समझो मैं बाप को देखती हूँ तो खुशी होती है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं है. And it's interesting because when you're in this experience of happiness and in silence, there may be the question, well, what is it that you're being stimulated by? What are you seeing that's making you happy? That kind of question cannot emerge in this state. क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है. Because the soul is extremely subtle.
तो जब मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ When I, the soul, experience तो myself to be जो subtle, मुझे उस समय फीलिंग्स आती है वो सूक्ष्म महसूसता की है. then the feelings that emerge at those times are deep, subtle feelings that bring a deep realization of who I am. हम उसमें कुछ देखने समझने की कोशिश न करें. We mustn't at that time attempt to try and see something or to try and understand something. वो कोशिश हमको स्थूल में लाएंगे. Because when I activate that kind of mechanism, that will immediately bring me back down into the gross state. Understand? Do you understand? Are you following the thread that he's taking you on? It's quite deep. You feel it now? Are you feeling something? Yes? So when we sit in meditation, So when we sit in meditation, तो हमें पहले अंदर sorry. नहीं, हमें पहले अपने अंदर में यह सोचना चाहिए So we have to first of all sit down and reflect. कि मैं बहुत बहुत सूक्ष्म हूँ, सोचने से भी सूक्ष्म हूँ. I am so subtle, I'm even more subtle than my thoughts. जब हम अपने को ऐसा मानेंगे When I consider myself to be that subtle, तो मेरी वो इंटरनल एनर्जी then my internal energy अपने में इमर्ज, will emerge from inside. क्योंकि फिर मैं संकल्प से परे हो जाएंगी. Because in that state, I will be able to go beyond thought, the form of thought. When I think, जब हम सोचते हैं, When we think, संकल्प करते हैं, we create मैं a thought. आत्मा हूँ, I am मैं a soul. परमात्मा शिव बाबा की I am Shiv Baba's child. तो ये संकल्प में मोटा रूप शरीर Then और This, आत्मा कंबाइंड हो जाए. even the thought is a gross form, and the thought is actually an expression of the soul combined with the energy of the body. Understand? I can talk like this way. Yeah, so even the soul is even more subtle than the thought, and so sometimes we talk to ourselves and we create a thought, but even that is gross because that is still the energy of the soul and the body mixed together. देखो इलेक्ट्रिसिटी है, Look at electricity. बल्ब दिखाई पड़ता है. You can see a light bulb. इलेक्ट्रिसिटी इसमें, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं सोचती है, उसके लिए कोई बात नहीं, वो आती है, वो अपना काम प्रकाश का करती है. And what does electricity do? It doesn't think anything about itself. It does its work, and it does its Prakash. work to give light. उसका काम है प्रकाश. Its work is to give light. वो प्रकाश ही पावर है. And that light is a power in itself. वो पावर कितना सब कुछ दिखा देती है. And that the light of that power is able to illuminate so much. In the same way, आत्मा is light. आत्मा प्रकाश, पर वो प्रकाश क्या? पावर. In the same way, the soul is light. But what is that light? It's a form of power. It's an energy of power. कौन सी पावर? What kind of power? शांति, प्रेम, Peace, love, आनंद, bliss, full knowledge. full knowledge. Think it. Think about it. मैं भी सोच के नहीं आई थी ये, I didn't reflect on this before I came here, परंतु आपके भाग्य से but out of your own fortune, मैं भी अभी रियलाइज करती जा रही हूँ. even I'm realizing this aspect deeply for myself as I'm talking to you.
क्यों कम समझती है, आप जरा सूक्ष्म बात को समझ सकते हैं, Because I know that you're able to understand these subtle aspects. परंतु एक बात हमें याद रखनी चाहिए, But we have to remember one thing, हर समय पर हर बात के लिए there is no question. that at any moment, at any time, there is no question. आप समझते हो हम क्वेश्चन समझने के लिए करते हैं, परंतु जहाँ क्वेश्चन है वहाँ दो बात है. We think we create a question to try and understand something. But actually, by creating a question, you create dualism. Because there's two aspects. A polarity is created. That means It means वो बुद्धि और है जो क्वेश्चन करती है. it means that the fact that you've asked a question, it means your intellect is working off a different track. You are not realized that you are a soul. You're not realizing that you're a soul at that moment in time, and so your intellect is asking a question. Soul is peaceful. There is no any sankalp also. There's no any thought either. So when जब हम ऐसी शांति महसूस करते हैं, So when we experience such a deep peace, तो अंदर में जो उसकी क्वालिटीज है, whatever are its qualities, the soul's qualities, आनंद, love, खुशी bliss, happiness, और नॉलेज की पूरी शक्ति, and the power of complete knowledge, ऐसी स्टेज में आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी. in such a stage, the sparkle on your face will change. उस समय आपके सामने कोई भी आएगा, आप And उनसे then, no matter who comes in front of प्रेम you, और उस रुहाब से मिलते रहे. you will continue to meet that person with a lot of love and intoxication. और अंदर कोई संकल्प बहुत सूक्ष्म जो वर्णन में नहीं आ सकता. And internally, it's as if your thoughts will become so subtle सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है. that they can't be spoken, because your drishti becomes very subtle as well. भले वो स्टेज अधिक समय नहीं रहती, पर इंडिविजुअल अपने अभ्यास के लिए पहली स्टेज में अगर हम अपने को इतना डीप अनुभव करते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ा सहज होता है. So this stage may not stay for long, but it's very important that we're able to create this for ourselves, to be able to go deep inside to understand ourselves in this way. जो बाबा कहते हैं गुणों को धारण करना, When Baba says imbibe the virtues, अपने को बार बार अपने संकल्प पर कंट्रोल करना, again and again control your thoughts. तो जब हम ऐसी स्टेज अनुभव करते हैं, And when we तब experience हमारे such a stage, ऑटोमेटिकली संकल्प में परिवर्तन, और अगर थोड़ा then भी automatically इधर उधर this का stage संकल्प आता है, transforms our thoughts. तो उसको सहज परिवर्तन. And if any other stray thoughts come in, then we're easily able to transform that. So Daddy, you're saying that when we become subtle and experience ourselves to be that subtle, powerful energy, from that, thoughts won't come. But is it that when we think, we lose the power of the soul? जब भी हम संकल्प ज्यादा संकल्प रचते हैं तो क्या अगर हम एनर्जी खत्म होती है? खत्म माना वो कम हो जाती है ना, क्योंकि उसके ऊपर आवरण, ये संकल्पों का आवरण आ गया ना, आवरण माना उसके ऊपर वो पर्दा आ जाता है ना. Because you see, the thoughts create a curtain over the power and energy of the soul. And so if you continue to think a lot, you diminish the energy and the power of the soul. The energy of the soul is curtained by too many thoughts. देखो, जब
कोई के साथ अति प्यार है Let's say you have a lot of deep love for someone, और जब वो मिलता है आके and when you meet them, और उस प्यार से आप मिलते हो तो And उस you समय meet them with कैसा love. कुछ चलता है? then do you have a thought at that time? It's like an instant feeling that happens of love. You don't think at that time. उस फीलिंग में आपका इमोशन में कोई भी शब्द निकलेंगे या वो फीलिंग्स आपको अंदर कभी खुशी देंगी, कभी प्रेम बाहर निकलेगा। And in that feeling, sometimes some words will emerge, or some happiness will emerge, or an expression of love will emerge जिसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। that you won't be able to describe in words. परंतु उस स्थूल में हम बहुत समय से रहे हैं, But because we've remained in the gross physical form for a long period of time, तो वो हमारे लिए एक नेचुरल हो गई। that it's become natural for us to live in this consciousness. सूक्ष्म हमारे से गायब हो गया है, We have lost subtlety. We've lost ourselves to our subtle form. अंदर है It's there, पर गायब है। but it's lost. तो गायब होने के कारण उसको वो बहुत डीप हमें उसको महसूस करना हो। And because it's lost, we have to take the time to be able to go deep inside and realize it. सो पहले इसके लिए So केवल firstly, जैसे हम लोग शुरू में आए तो ये एक अंदर लगन लग गई, we came in the beginning and we had this deep love. मैं अंदर आत्मा I am the soul inside. प्रकाश स्वरूप मना इतनी पावरफुल है I am a form of light, a powerful light, जो अंदर ऐसी छिपी हुई है दिखाई नहीं पड़ती। that it's so deeply embedded and hidden inside that it can't be seen. दिखाई भी नहीं पड़ती तो हम जानते भी नहीं, And if it can't be seen, then we don't even know it. और काम सब वो ही कर रही है। And the soul is the one that's doing all the work anyway. तो जब ऐसा वंडर लगता है अपने ऊपर तो जागृति आ जाए। And so when you are amazed at this aspect and wonder about it, then it's as if you awaken the energy of the soul, awaken your awareness. और जब वो जागृति आ जाती है तो उस जागृति से And when that awakening happens, हम अपने को जैसे महसूस करते हैं अभी मैं हूँ, then you realize yourself in that moment that yes, this is who I am. मैं वो शुद्ध आत्मा हूँ। I am that pure soul. और ये मैंने इसको जैसे पोशाक पहनी जाए ऐसे मैंने कवर लिया है। And just as you put on a costume, in the same way, this body is just a cover I'm wearing. शुरू में हम कहते थे, बाबा भी हमें कहते थे कि मैं मूर्ति हूँ Baba would say to us in the early और ये days, बॉडी I मेरा am an मंदिर है। image. I, the soul, am an image, and I am residing in the temple of this body. तो ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं इस मंदिर में मूर्ति बैठी। And so the body is my temple, and I am this murti. This, this images they have, मूर्ति little कैसी murtis of the होती है? deities in the temple, sitting in the temple. मूर्ति का चेहरा देखो। So what does a murti look मूर्ति like? को देखो तो स्वयं Look भी at the face of a murti, स्वयं भी जैसे कि उसे याद में आ and जाए। you will also remember that original state. तो ऐसे अंदर की जब स्वयं को लगन है And so internally, when you have this कि deep मैं love जो inside, अंदर हूँ इतनी छिपी हुई, that whatever I am मुझे so deeply अपने hidden छिपे हुए स्वरूप को that I have to अनुभव करना। experience my hidden form. स्वयं स्वयं के छिपे हुए स्वरूप को The self has to realize its own hidden self. इस प्रकार से सोचने से भी खुशी जागृत होती Even है to start thinking like this will और वो awaken your खुशी happiness. मुझे स्वयं के गुप्त पावर को महसूस करा। And that happiness will help me to experience my incognito power inside. और फिर उस खुशी में, क्योंकि इसके लिए थोड़ा समय अगर हम एकांत में
अच्छा अभी समझो हमें एकांत का इतना समय नहीं मिलता है, पर जब हम याद में बैठते हैं, And to sustain this happiness, we do need to spend some time in solitude. आधा Okay, घंटा, let's say we पौना don't get घंटा, the time to sit in isolation in solitude, but whenever we sit for remembrance, even if it's half an hour, 3/4 of an hour, बाबा कहते हैं अमृत वेले ये अभ्यास करो। Baba says, do this practice at Amrit Vela. अगर सचमुच अमृत वेले हम इस खुशी से बैठे, If really you तो sit ये with this झटके कभी happiness नहीं किसको। at Amrit Vela, then you will never nod off at Amrit Vela. आज सुबह को आई थी ना मैं I came this morning at Amrit Vela. मैं जा रही थी, The majority of you were nodding off. कई समझते हैं हम ऐसे ही आंखें बंद कर। Some were sitting there thinking, well, I'm just going to sit here and keep my eyes closed. Why? जब मैं अपने अंदर को देख रही हूँ, When you're looking at yourself inside, क्यों मेरी आंखें बंद? how can your eyes close? That means where is your insight, internal insight? That are closed. So if your eyes are closed, where's your internal insight? What are you seeing inside? Is that closed as well? आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं अंदर की आंख खुली है बाहर की बंद है। You can't say that, oh, my inner eye is open, but my outside eyes are closed. These eyes are closed. That means your brain is Closed. तो ये बहुत थोड़ी सूक्ष्म बात है। These are very subtle aspects. इसका मतलब हमें पहले First अंदर of में all, ये लगन हो we have to have this deep love कि inside. हम अपने अंदर के स्वरूप को जरूर अनुभव करें That I definitely want to experience my internal और form. इस उमंग से, And with this इसी enthusiasm रुचि से and this kind हम of जैसे interest, अपने आप अंदर जो बाबा ने नॉलेज दी है, I have to take उस myself नॉलेज को inside स्मरण करते करते and continue अंदर to समा जाए। contemplate the knowledge that Baba has given me so that I can go inside and wake इन this up. उमंगों से केवल शब्दों को हम रिपीट नहीं करते, करेंगे वही नॉलेज जो सुनी है, परंतु इन उमंग से Yes, we then may repeat the knowledge that we've been given, but it will be filled with an enthusiasm. ये हम कुछ समय पहले A little bit before, हम इस बात को सोचती रही I had thought about this कि aspect, सचमुच आत्मा का रूप क्या है। that जैसे what आप is पूछते the हैं ना, form of the soul? Just as you often ask, what हम is really the कहते form हैं of the आत्मा soul? प्रकाश, प्रकाश भी तो फिर कुछ दिखाई पड़ेगा ना, तो We क्या say हम the soul अपने is अंदर light. प्रकाश देखें? But of course, light should be seen. So is it that we have to look at ourselves as light inside? अगर लाइट को देखते हैं तो वो भी तो एक देखने वाली चीज होगी। If you look at light, then you're still looking at something that has form. पर आत्मा अंदर ऐसी है, गुप्त समा गई है, But the soul is so incognito inside that it's almost like it's merged. जिस कारण हम भूल गए हैं। And it's because of that we've forgotten it. तो अभी बाबा ने हमें जागृति दी है, And so Baba इसके has अंदर नॉलेजफुल given us the insight and awoken us to the knowledge of this thing that is merged inside. अंदर मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। That I am a knowledgeful soul inside. तो वो क्या है, What is it? उसका रूप क्या है? What is its अभी हम form? कहते हैं आत्मा शांत स्वरूप है। Okay, तो we शांति say का स्वरूप क्या है? the soul is a form of peace. So what is the form of peace? तो ये शांति, प्रेम, आनंद, And so love, नॉलेज, ये peace, सब and मिली bliss हुई and पावर, knowledge, all of this together is a power. जिस पावर, उस पावर में ये सब बातें हैं जो कब प्रेम का रूप इमर्ज है। And everything is merged in this power to such an सबकी मिली extent हुई they're all combined, they're all met दैट together, लाइट। and अभी that जो हम is लाइट light. रूप कहते हैं वो लाइट इन सब
शक्तियों स्वरूप से मिली हुई है। So when we talk about light, we're talking about the form of all of these things that have come together. Peace and love and bliss and knowledge. कोई भी सब कभी एकदम हमें साइलेंस अच्छी लगती है, उसमें भी देखेंगे आपका चेहरा खुशनुमा रहेगा। Let's say sometimes you like this experience of just sitting in silence. Just observe at that time, your face will appear to be very, cheerful, और smiling. ऐसी स्टेज में अगर कोई आपके सामने आता है, आप उसको भी उसी रूप से देखें। And whilst you're in that stage, anybody who comes in front of you, you will look at them in that way. और बड़ी साइलेंस से, And with a lot of silence, पीसफुल एंड स्माइलिंग फेस से उसको देखते, you will continue to look at them with a peaceful और and अंदर बड़ी smiling खुशी face. होगी। And inside you'll experience a lot of happiness. Daddy, one question. शशि बहन, व्हाट यू थिंक? प्रश्न है शशिबेन? नींद करना। दादी, मन की बात, जब योग में बैठते हैं तो सभी कहते हैं मेरा मन तंग होता है. When we sit for yoga, people experience distress from their own mind. You say when we sit and we experience soul consciousness, then naturally in that feeling, that's how we will look at others. We'll relate to others naturally like that. But let's say we've taken sorrow Now from what someone. you feel when you are listening? What did you feel as you were listening to Daddy? Speak up. That must be practiced now also. So as you're listening to Daddy, are you practicing what she's saying? बाबा ने अभी हमको, देखो वंडर है, कोई भी आत्मा की नॉलेज को स्पष्ट नहीं कर सकता है। You know, it's a wonder because nobody has been able to clarify the knowledge of the soul. परमात्मा ही The हमें Supreme स्वयं का भी और आत्मा को इतना स्पष्ट रीति से समझा, has been able to explain so clearly about himself and about us, the soul. तो उस बात को समझने के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे पास वही आत्माएं आएंगी जो पहले वाली हैं। And so Baba has often said that the souls that will come to me are the souls that were with me originally. तो आप समझो हम बाबा की वो आत्माएं हैं, हमें इसको जरूर समझना है। And so when you consider yourselves to be those original souls, then we definitely have to understand this aspect हमने deeply. अनुभव, हमारा ही अनुभव बाबा हमें बता रहे हैं, तो हम अभी ये अनुभव जरूर करेंगे। If Baba is telling me what is my experience, then I definitely have to sit down and experience it. सो पहले तो ये निश्चय अपने में, So first you need to create this faith in the self. और वो निश्चय मुझे करना है, यानी मुझे ये अनुभव होना ही है। That I have to have this experience. जब इतना अंदर से अनुभव पर निश्चय, अपने पर निश्चय रखो, तो महसूसता सहज होंगे। If you are able to keep that much faith in yourself to experience this, then that experience will come easily. Otherwise, questions and questions. क्योंकि क्वेश्चन इस समय की, इस जमाने की बात है। हमारे जमाने में Questions are actually from this time, a reaction from what's happening in this time. जब हम और बाप अपने राज्य में है तो वहाँ क्वेश्चन नहीं है। When we and the Father are in our kingdom, then there's no question जो there. फादर ने हमें वर्षा दिया, The inheritance that जब the उसके Father has given प्रैक्टिकल us, में है तो क्वेश्चन when we're in the नहीं है। experience of that inheritance, then we have no questions. तो हम अपने को इतना ऊंचा ले जाएं, And so I बुद्धि have से, to take अभी my बुद्धि से intellect इतना ऊंचा ले so जाएं, high, तो थोड़े समय के लिए हमें अपने बुद्धि को, समझ को जब बाप के समझ से मिलाते जाएंगे, तब हम अपना अनुभव सहज
और रियलिटी में कर पाए. And so for a period of time, I have to align my intellect or my understanding with God's understanding. And as I continue to align my understanding with God's understanding, then very naturally and easily my experience will flow. क्योंकि इस समय अगर हमारी बुद्धि जल्दी जल्दी अपना काम करती रहेंगी, Because बाप if my की नॉलेज को intellect, समझेंगे पर बुद्धि हमारी अपनी रीति चलेंगी. this is good. What happens is we understand Baba's knowledge, but my intellect has a habit of working by itself. तो मिक्स हो जाने के कारण रियलिटी का जल्दी अनुभव नहीं कर पाएंगे. And so because there's a mixture then in my understanding, because the intellect works by itself, realization doesn't happen quickly. क्योंकि इस समय की भी बुद्धि हमारे पास बहुत काम करती है. Because at this time our intellect is overworked, it's working a lot. इसमें केवल हम इतना काम करें, We only have to do this much work. जो भी हमें इस समय की बुद्धि है वो भी चाहिए इस समय के लिए. Yes, okay, whatever intellect you have, you need it for this time now. परंतु जैसे कहा जाता है ना, स्थूल में जिस समय जो काम है उस समय वो काम करें. But we have to use it in an appropriate way, just like they say, even in practical aspects. Whatever work you have to do, you do it for that period of time. इसी प्रकार से In the same way, हम स्वयं को इस प्रैक्टिस में डालें. we have to practice this, put ourselves in this practice of using our intellect only when we need it. जिस समय हम दुनिया के काम में है, दुनिया वालों से है, उस समय हमारी दुनिया की बुद्धि काम करे. When we are with the people of the world, we have to carry out practical tasks in the world, then the knowledge and information that we have in our intellect has to be used at that time. जिस समय हमको बाप नॉलेज दे रहे, जो दे रहे हैं, तो जिस अथॉरिटी से, जिस भावों से बाबा हमें समझा रहे हैं, हम उसी भाव से सोचने का विचार करें. And at the time that Baba is explaining to us and giving us this knowledge, we have to capture the intention of what Baba is saying to us and accept it, and our thoughts have to work in the same way that God's intention is working. उसमें हम इस समय के बुद्धि का क्वेश्चन न लाएं. And at that time, you mustn't allow your intellect to raise questions. हम बाबा के महावाक्यों को, बाबा की अथॉरिटी को समझ करके उसको समझने का प्रयत्न करें. We have to make the effort of understanding Baba to be the authority and of accepting that authority and make myself understand Baba's intention. इस प्रकार से जैसे हम कोई नई नॉलेज लेते हैं, स्थूल में भी, Even in a practical form, physical way, when you start to learn new knowledge, न्यू नॉलेज, कोई भी नई नॉलेज, any new knowledge तो that you जो learn, आपको प्रीवियस दूसरे टाइप की नॉलेज है उसको उसमें मिक्स नहीं कर सकते. you can't mix your old knowledge with new knowledge that you're receiving. नई नॉलेज जिस ढंग से आपको मिलती है उसको समझने, उसी ढंग से समझने की कोशिश. You have to accept and make effort to understand, to accept that knowledge in the way that it's being given to you. तभी आप उसको अच्छी रीत से समझ करके और कर सकते. And only then will you be able to fully understand it and apply it. इसी प्रकार से जो हमको इस दुनिया की नॉलेज इस काम के लिए है वो कर ली. In अब the same बाबा way, जो बताते हैं उसको हम मनन करें और मथन करें. बाबा के कहने का भाव, बाबा किन भावों से हमें समझाते हैं. in the same way, just as these practical matters we have to do, yes, we use the knowledge of the world and continue to do those tasks, but when it comes to listening from Baba, then it's very important for us to deeply understand what is the intention, what is behind what God is saying to me. बस ये बात अगर हम समझने, उसी बात को, उनकी डीपनेस को समझने की कोशिश की और एक बार वो बात बुद्धि में आ गई, फिर उस लेवल में चलना सहज. And when I churn these things very deeply and I deeply understand what is God's intention,
then it becomes very easy for me to keep my intellect on the track of that thought that is the same as God's thought. फिर हमें बहुत उसको अनुभव करना चाहिए. And then it will become very easy to experience it. केवल हमारे अंदर लगन और निश्चय की डेप्थ, इसको ही बाबा कहते हैं. निश्चय तो सब कहते हैं, हम निश्चय बुद्धि है. This is what Baba means when he says you need deep love for the self and faith. Many people talk about faith and they say, well, we have faith anyway. फेथ उसको कहा जाएगा, वैसे भी कहा जाता What are we है. going to call faith? भगवान के आगे जो भगवान कहे वो हमें मानने में फायदा ही है, क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी. Faith means that whatever it is that God is telling me, I accept that as beneficial for me because He is the Almighty Authority. क्योंकि अथॉरिटी की बात को मानने में मुझे फायदा है. Because to accept something that's being given to me by an authority, that is beneficial for me. अथॉरिटी की बात अगर हम मान करके उसी प्रकार करेंगे तो अथॉरिटी मुझे एक्सेप्ट करेंगे. If whatever the authority is saying to me, I accept it and do it in that way, then the authority will accept me. फिर हम उसके हर खजाने के मालिक बन And जाएंगे. then we become masters of all of His treasures. तो फिर जो भी बात बाबा समझाते हैं, Then whatever it is that Baba explains, हमारे अंदर फिर वो क्वालिटीज इमर्ज होती जाएंगी. it's those qualities that will continue to emerge inside me. सिर्फ फेथ को पूर्ण रूप से विश्वास में रख करके चले. You have to have complete faith in the form of trust and continue to उसको move forward. अंधविश्वास नहीं कहा जाएगा. This isn't blind faith. भक्ति में हम अंधविश्वास कहते हैं क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं है. In bhakti, we say blind faith because we don't experience the benefit of faith. और फिर भी भक्ति में माना जाता है अगर कोई अपने भावना से And even in bhakti, they say that if someone has bhavna, पूर्ण रूप से करते हैं तो भी उसको उसका फल मिलता है. that even if somebody has complete bhavna and they accomplish something with that bhavna, then they will definitely receive the fruit of that. तो हम सर्वशक्तिवान बाप का अपने प्रति इतना रहम, अपने प्रति इतने वरदान, अपने प्रति इतनी भावनाएं कि बच्चे मेरे सदा सुखी बने, ऐसी भावनाएं भगवान की हमारे प्रति है, यह देख करके हमें खुशी होनी And चाहिए. so, God, we are the children of God, and God has such intentions and feelings of mercy for the children, feelings of blessings for the children, such pure feelings. And if we're able to accept God's bhav, His intention and His feelings for us, then we can make ourselves so elevated. तो बाप का हम बच्चों पर इतना प्यार है, उस प्यार को ही हम स्वीकार कर लें. The Father has so much love for the children, and the child has to accept this love for हम itself. स्वीकार करके हम बाप को प्यार करें तो हमारे अंदर सब क्वालिटीज आ जाए. Because when we're able to accept this love for ourselves, then in return, when we love the Father, then we're able to draw and absorb all of the Father's quality. It's that love that allows us to absorb those qualities. Is that right? Understand now? So I think अब मैं सोचती हूँ बात थोड़ी सूक्ष्म है, This is a subtle aspect, परंतु मैं कहूँगी कि ये हमारा फाउंडेशन, but this is अगर our ये लिंक foundation. हमको आ जाए और इसी रास्ते से हम अपने को चलाएं तो अनुभव करना मुश्किल नहीं और अपने संकल्प पर कंट्रोल करना बड़ा इजी हो जाए. If we understand how to make this link, then it's as if the road starts to become clear for us and our experiences will start to flow.
कंट्रोल क्या कहे, परंतु हमको वही रास्ता मिल जाएगा कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो सीधा हमारा बाप से कनेक्शन रहेगा. And then it won't just be an aspect of controlling our thoughts or having to control anything, but there'll be this feeling that this is a straight, clear line and a road, and that if we continue to remain on this, we will experience the Father. तो अभी बाबा कहते हैं सदा याद रहे So Baba says, मैं constantly किसकी remember संतान हूँ. whose child I am. शुरू में In the मैं beginning, कौन हूँ who am I? और अब फिर मैं कौन हूँ. आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए. Who was I originally? Who am I now? There needs to be a deep practice of soul consciousness and of going beyond the awareness of the body. तो हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे, And so we are Baba's children who have faith in the intellect. सर्वशक्तिवान बाप, He is the इतनी master, ऊंची नॉलेज, ऊंचे ते ऊंचा बाप, the Almighty Authority Father is giving इतनी us such ऊंची elevated knowledge, देने के लिए हमारे पास स्वयं आए हैं. and He has come Himself to give us this high knowledge. हम उस बात को बड़ी ऊंचाई से स्वीकार करें Let's accept this knowledge with the same elevated and high feelings it's been given to us with. और बाप के महावाक्यों को हम एक शक्तिशाली महावाक्य समझ करके उसको अच्छी रीत समझना और फिर उसके अनुसार करते चले, ऐसा अपने में निश्चय जागृत करें. And so, as we continue to accept these feelings, we have to awaken this faith of understanding what it is that the Father's great versions and what it is that He wants from me, and then we will be able to continue to move forward with that faith. जैसे बाबा कहते हैं बच्चा कभी बाप को भूल नहीं सकता. Baba says a child can never forget his बल father. माया के राज में माया अपना चलाती है. It might be that in Maya's kingdom, Maya does her thing and influences you. कभी कभी उसका प्रभाव पड़ भी जाता है, परंतु फिर हम अपने को याद दिलाएं, अरे हम तो किसके बच्चे. Yes, she will attempt to influence you, but you have to then make yourself remember again, whose child am I? केवल हमारा इंटरनली अपने पर अटेंशन और बाप के महावाक्यों पर चिंतन. Internally, I have to pay that attention on myself and continue to churn deeply and contemplate on God's elevated versions. बुद्धि को हम बाप के महावाक्यों की गहराई में डालने की कोशिश. You have to continue to make the effort of immersing your intellect in God's elevated versions. केवल नॉलेज समझ करके शब्द नहीं याद करें. Don't just remember the knowledge in the form of words. वो तो ऑटोमेटिकली नॉलेज के शब्द याद रहेंगे. You will remember the words of knowledge, परंतु उसके डेप्थ में चिंतन करें तो चिंतन की धारा बाप से मिलती. but go into the depth of that knowledge, and the thread of your thoughts will continue to align themselves with God's thread of thinking. जो हमें स्वयं के स्वरूप में स्थित होना और उस पावर को अपने में अनुभव करने में मदद. And that will help us to stabilize in our original state and to experience our original power. न अभी मैं समझती हूँ कि इतना ही काफी है. I think this तो much आप is enough लोग भी now. सोच में पड़ गए हैं कि आज ये नया मेथड हमारे सामने क्या आ गया. And you must be thinking, ऐसा है ना. do you feel that Chandra what is mein? this new method that's been put in front of us? Do you feel some new understanding is opened up in relation to the soul? Not new understanding, but little New insight, explanation थोड़ी. little explanation. Yeah. Thank you, Daddy. Thank you. I think now मैं आप लोगों को
थैंक्स दूं I say thanks to जो you आपने हमें याद किया है और हमें that you चांस remembered दिया है। me and gave me a chance to come and meet you. आपसे बात आपसे कर रही थी पर शुक्रिया बाप का मान रही थी Yes, I was talking to you, but I was thanking the Father. क्योंकि ये बातें सोचने से नहीं सोची Because जाती you हैं। can't think about these things and understand them. परंतु अगर हमारा कॉन्शियस थोड़ा डीप सोचता है तो ऑटोमेटिकली फिर उन्हीं रीति से उस बात को करने लगता But when our consciousness is able to go into some deep contemplation, then automatically these things begin to emerge. हमको अपने कॉन्शियस को थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करनी We have to make the effort to take and make our consciousness deep. क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है और बहुत डीप है Because the soul is very subtle and is very deep. आत्मा के शरीर के कोई हिस्से में नहीं नजर आएंगे Mana? शरीर के कोई हिस्से में आत्मा नहीं है ना शरीर 5 तत्व If you look at the body, then in no part of the body can you see the soul. That's how deep and subtle it is. आत्मा इतनी सूक्ष्म है शरीर छोड़ के चली जाती है दिखाई नहीं पड़ती That even it's so subtle that even when the soul leaves the body, you can't even tell it's left the body and where it's gone. तो मैं आत्मा इतनी सूक्ष्म कितनी पावरफुल So I, the soul, if I'm that subtle, just Emerge imagine करें हम how अपनी powerful I power. am. So emerge your power. ओके Thank नाउ you. अगेन Let's have we will experience of that I am separate from this body. So let's have 5 minutes. इतना ही सोच के meditation. बैठे देखो अंदर क्या क्या उमंग आते Just sit in this awareness and see what enthusiasm emerges from inside. So 5 minutes of meditation. मैं आत्मा हूँ
करती